And I remember there were bugs in my eyes. There were insects in my eyes. And अंदर there चले was गए dust, थे? yeah, like here. हाय दोस्तों, मैं हूं आपका राजपाल। हाय एवरीवन, मैं अभिषेक बैनर्जी। हमारी जब शूटिंग शुरू होती थी, शीज ओके Yeah. या अभिषेक को ठीक है, वो हाँ, वो कल या का राजपाल हाँ, ठीक है वो। ठीक है, क्योंकि तारा को तो दो लोग आते थे ऐसे ऐसे इसको पकड़ के, एक इधर पकड़े हुए है, एक इधर तारा को ऐसे आ रही है, फिर ये जैसे एक्शन बुला तो सबको छोड़ के फिर ये अपनी टोटल वही एनर्जी, और जैसे कट हुआ Hi everyone, मैं हूँ तारा सुतारिया और आप देख रहे हैं और बताओ स्तुति के साथ। और बताओ विद स्तुति। हाय गाइस, वेलकम टू और बताओ। मेरा नाम स्तुति है और आज हम बैठे हैं विद द टीम ऑफ अपूर्वा, जिनको हम बोलने वाले हैं और बताओ। एंड ये ऑनेस्टली आई वांट टू स्टार्ट विद, बिकॉज अगर आपने ट्रेलर देखा है तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कुछ कास्टिंग चॉइसेस को देख के, एंड ऑल्सो वेरी इंट्रीग्ड कि क्या कमाल इन्होंने किया है इस फिल्म में। सो वेलकम टू और बताओ, राजपाल यादव, तारा सुतारिया एंड अभिषेक बैनर्जी। थैंक यू स्तुति। और बताओ। I want to start with Abhishek because abhi Mami, got over and I saw Stolen. Okay. And जितना मैंने ट्रेलर में देखा है, so tell me, you shot Stolen before this, after this, because there's a lot of that rawness and. Yes, actually right after this. अरे. And मतलब and thankfully मैंने इसकी शूटिंग भी राजस्थान में की और स्टोलन की शूटिंग भी राजस्थान में ही थी। और इस शूटिंग में भी बहुत सारे गाड़ी, एक्चुअली इट्स क्रेजी बिकॉज इस शूटिंग में गाड़ी के बहुत सारे सीक्वेंसेस थे जो मैंने शूट किए, एंड स्टोलन तो पूरी गाड़ी पे ही है। देयर इट्स आल्सो अबाउट अ रोड इंसिडेंट एंड दिस इज आल्सो रोड इंसिडेंट, एंड जस्ट द कैरेक्टर रिवर्सल हो जाता है। यू नो, सो that time I was not thinking about it, but I recently saw Apurva and I saw it, I'm like, yaar, ye to amazing hai. Like for an actor it's amazing that you have seen back to back films of your same location, same kind of feel, same kind of world, similar plot lines where an incident changes something about the journey, and it was like really it's a बहुत ही special feeling when you can have both the films releasing at the same time. Very cool. So all that action was all you? All me, yeah. All me. Not bad. Yeah. Tara, coming to you. I do my own stunts. Brilliant. And I'm sure you've been asked this bahut. But I'm going to quote Dia Mirza here, who once said that she was told that she's too pretty for certain roles. I mean, suddenly her beauty became her bane. Did you feel that in your career span, that because you were seen glamorous roles mein, so you grabbed onto this opportunity when it was offered? Yeah, I do. I really wish that I had the opportunity to do this, sort of from the get-go. I understand why there was why there is or was a certain perception around, how I look or the films that I've done and things like that. Totally understand. But I think as young actors, we're raring to go, and there's so much today that can be done with all of us. I definitely grabbed onto this as soon as I heard the narration, and I was so excited, and I'm just hopeful that this opens the door to me and people like me in our industry, and that young women and young girls can just be seen in more exciting and promising roles like Apurva, and not just be limited or restricted to just one kind of space, because all of us we want to do everything. We don't just want to do one thing. That's the exciting part of this job, is you should be able to and be given the opportunity to do a bunch of things rather than just stick to one thing, which becomes a bit boring after a certain point. राजपाल जी जब ट्रेलर देख रहे थे ना, तो मैं वेट कर रही थी कि एक तो आएगा इनका जो द जोन दैट वी आर सो यूज्ड टू सीइंग यू इन, बट ऑल्सो एज एन एक्टर आपने जो भी प्रोजेक्ट किया है, यू मेड इट सो रिच, अपनी कॉमिक टाइमिंग हो या अपने ब्रिलियंस से। यहाँ पे थोड़ा हटके रोल है, इतना आपको इस तरीके के किरदार में नहीं देखा। एज एन एक्टर डू यू फाइनली फील कि मुझे मौका मिल रहा है to kind of delve into characters that you wanted to? एक्टर तो हमेशा ये अपॉर्चुनिटी खोजता रहता है और अब मौके की तलाश में ही रहता है। कुछ लकी होते हैं, मिल जाते हैं, कुछ अनलकी होते हैं जिनको मौके नहीं मिल पाते हैं। तो आई एम वेरी लकी। और इस फिल्म में सबसे की जो यूएसपी आपने बताई कि जिसमें हंसी मजाक, ये इस फिल्म में सबसे पहला ही टास्क ये था कि चेहरे पे मुस्कुराहट ना आए।
और ये जी, अपने आप में ही जी, होमवर्क था जी। कि अगर हमारे चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट, यार हमने अपनी मुस्कुराहट को गंभीरता से नहीं लिया, Yeah. तो आई थिंक फिर ऑडियंस इसको गंभीरता से नहीं हम्म, लेगी। तो आई वाज वेरी अवेयर और कॉन्शियस भी था, लेकिन एक नया कुछ जीने को मिल रहा था, उसका एक्साइटमेंट भी था। और अभिषेक जैसा यंग एक्टर सामने और बढ़िया तारा जैसी एक अलग बिल्कुल हम, क्योंकि जैसा कि yeah. हमने जो तारा की फिल्में हैं, लेकिन इस फिल्म में तारा का एक जो रूप है एक बिल्कुल अलग रूप है। True. तो आई थिंक हम सबके लिए ये फिल्म जो है नई भी थी, कि बोलते ना फिल्म नई हो तो नई दिखे, Yeah. तो Yeah. फिल्म भी नई थी और हमारे सबके कैरेक्टर भी नए हैं। तो आई थिंक वो सबसे ज़्यादा अच्छा सुख था। क्या आसान होता है लोगों को हंसाना या डराना? सबसे सरल होता है सब कुछ, बस कन्विंस हो जाए सामने वाला, चाहे हंसी हो चाहे सीरियस हो, अगर सामने जो देख रहा है वो कन्विंस हो जाए तो फिर सब सरल है। और वही कन्विंस करना ही या सेटिस्फाई करना कि नहीं ये आपने जो किया मुझे अच्छा लगा, आई थिंक ये सबसे दुनिया कठिन है। In and as Apurva, Tara, I'm Love so it. excited, Yeah. but what is it about it that also makes you nervous? I love that phrase, by the way, in and as Yeah. Apurva. When I saw that in the trailer the first time, I was like, man, that's very cool. I know, it's very When you cool. see, Yeah, you know, it when you has a just see nice that, ring to because it, you've yeah. grown up seeing that, Yes, right, in so many yes. films, so and so, in and as, Yeah. and I didn't know that that's what they were Yeah. going to write in the trailer with the super. And then when I saw it, I was like, oh, that feels very, very cool. And I have to say, as a female actor, it बहुत कम होता है. Yeah. And it made me feel incredibly special. And I have to say this as well, I have felt so incredibly taken care of by our producer Murad sir, by our director Nikhil sir, by everyone on the team, Rajpal sir, Abhishek, Dhairya, all the actors in the film. It's been a really, this is how filmmaking should be. And it's been an incredible experience, and I'm really, really proud. So when you said in an as right now, I have to pinch myself sometimes. It's a great feeling. That's so sweet. You know, hearing all of you speak, आप लोग, you know, one can understand कि जो आपकी कला है, आपका skill है, it is like you said to convince people कि जो किरदार मिला है, you want to do it to the best of your abilities. और yet आपके चाहने वाले, आपके fans, हम जैसे लोग जो देखते हैं, आपको किसी किरदार में बहुत प्यार मिलता है, पर वो आपको बांध भी देता है. A lot of people want that, they want कि हमें उस किरदार के नाम से बुलाया जाए, हम उतने हिट हों, and then वो फिर अपनी ज़िंदगी उसे चेंज करने में भी निकालते हैं कि एक और पहचान हो, हम खुद को एक्सप्लोर करना चाहते हैं. ये एक सर्वाइवल थ्रिलर भी है और इंडस्ट्री में बड़े साल आप लोगों ने सर्वाइव किए हैं, अपने अलग अलग एक्सपीरियंसेस रहे हैं. अगर मैं पूछूं वो कौन सी चीज़ है जो आपकी सीख है, जो सबसे ज़्यादा जिसने मदद करी इस इंडस्ट्री में सर्वाइव करने के लिए आपकी? राजपाल, आई थिंक हार जो उसको आपने वो क्या शब्द बोला था कि रिजेक्शन. आई थिंक रिजेक्शन, चाहे स्टूडेंट, बॉलीवुड की बात नहीं कर रहा हूँ, कि मुझे हमेशा रिजेक्शन का डर या हार का डर, तो हार मैं अपने साथ में लेके चलता हूँ ताकि इधर तक रहे, जितने भी हार हैं ये ठीक रहे. तो आई थिंक इसी हारों में से जीत के तिलक लग जाएंगे कभी. तो जितना आई थिंक जब मुझे हार मिली है तब तक मुझे एक जीत का मौका मिला है, मुझे ऐसा लगता है. That's very deep. क्या बात. कि इसके मतलब यहाँ पे मैं रिजेक्ट हुआ या मुझे हार मिली या मैं फिट नहीं हुआ, तो इसके मतलब मेरा फिट का स्थान तय है. तो मतलब अब हार का अनुभूति नहीं है, हार पता ही नहीं है. तो आई थिंक तब फिर जीत का भी पता ऐसे ही है कि मतलब, लेकिन जिनकी हार सुनिश्चित, अगर हार की समझ आपको है तो जीत का लक्ष्य आपके दिमाग में कतई क्लियर है. ये मतलब वही मुझे जीने के लिए लगातार. That's beautiful. Abhishek? What? You're the one thing that's helped you survive so long. I don't know. I think I have a lot of patience.
हाँ वो तो एक एक्टर को चाहिए waiting game का अपना strong अभिषेक दूसरा चारा भी नहीं है। हाँ मतलब बोले यार लॉट ऑफ पेशेंस बोले यही है, I think that's the strength I have to Yeah. survive, that I can be very patient and I can distract myself. on the set with- also you will wait for as long yes, as yes, I don't without have any throwing a problem. For me, tantrum. no, I don't. Well, in fact, I love that because then you're there, you're chilling, and like otherwise, if you're not shooting, it's very boring. Yeah. So in fact, I now am addicted to set life. So because I feel that is so like I don't know, adventurous. Every day you go to a different location, so you're like always on that. So patience has never been a problem for me. I feel वो काफी है life में, and I can easily distract myself with my life, traveling and things like that, which I Yeah. want to do. So yeah, I mean वही है. I mean I'm still like in the running, right? तो मैं तो सर को तो इतने साल हो गए, तो उनके पास जवाब है. तो बस अभी तक जवाब है नहीं कि मैं कैसे survive करूँगा, क्या करूँगा. I'm just trying. I'm fighting every day. Tara, what about you? I think as a young person, what's really important, not only in our line of work, but in life also, is to begin to really know yourself. And I think this industry has, जो सबसे बड़ी सीख मिली है till now, at least I can say, is whatever experiences I've gone through, the good stuff, the bad stuff, the very confusing stuff, I have begun to really, truly and deeply know and understand myself, which gives me clarity, which helps me understand who I want to be, how I want to be, and who I definitely don't want to be. That is helpful not only as a performer, but first and foremost as a human being. And so being in this industry has actually helped me go even deeper into myself. And that's one thing I've taken a lot of pride in my whole life, is actually that I have always tried to know myself. But this industry, it can teach you so much so soon that it's beneficial actually. Sometimes it hurts, it's painful. Experiences in this industry can be very cruel. But then you also learn so much that you're prepared for life, for anything that's thrown your way. So that's what's it's really taught me that. Lovely. Also, you seem to be prepared for a lot looking at the trailer because बड़ा ही hardcore और पता नहीं मिट्टी से गुजर रहे हैं और सारे intense scenes हैं. How is it shooting all of that? It's so much fun. It was? I'm not gonna lie. I know it looks very intense. I really enjoyed it. I know it's a lot. I'm not gonna lie. It's a lot. Every day was a lot. Like there was no day of like chill करते हैं, ice cream खाते हैं, वो करते हैं. Actually ice cream ही खाते हैं. Okay, start from your makeup routine, because you would be used to being glammed up. Yeah. और यहाँ आपको जरा glammed down. The makeup that was used for this film was specific No to makeup. mitti and ambar and more mitti and more ambar and नहीं उसके बाद भूल गए सबसे बड़ा मेकअप. एक गाड़ी गई, उसके बाद में 5 मिनट तक वो चारों तरफ जो डस्ट आती थी वो सबके कैरेक्टर सेट कर Actually, देती we used to eat food. Sorry, मतलब eat dust, apply dust. So there's this one So- sequence where I'm in this, and we were shooting in a well for a couple of days, and I remember there were bugs in my eyes, there were insects in my eyes, and there अंदर was चले dust, गए थे? yeah, like here, and my my dear makeup artist is looking at the monitor, and I've come out of the well and she's looking at me like, कैसे बोलूं? And I was like, what? And I also kept doing this, and she's like, oh Tara, just come here 1 second. And she's like, I'll just try to. And then I realized. So I mean, every day there was some new experience like this happening. One day some shoulders come Getting out. dislocated. सुबह ये कोई नहीं What पूछा shoulder था. has सुबह come ये She नहीं has कोई पूछता था. me and her have the same problem. Our shoulders get dislocated. नहीं So सुबह imagine her shoulder getting dislocated. Imagine we have to now carry her and drag I'm her. not envious. Why? But no complaints. It was really fun. और नहीं सबसे बड़ी खासियत थी कि हम लोग शूटिंग में अलग-अलग जाते हैं तो आर यू फाइन, बढ़िया, सब बढ़िया, हाउ वाज द, मतलब सब ये चलता है. हमारी जब शूटिंग शुरू होती थी, शी इज ओके, या अभिषेक को ठीक है, वो कल का राजपाल ठीक है क्योंकि everybody is injured. शूट तो कर सकता है ना. हाँ. हाँ नहीं मैनेज तो हो जाएगा. मतलब Who is it? कौन he तो कितना एक ठीक है, immobile. कौन कितना ठीक है उसके हिसाब से सिंपैथी भी दे रहे हैं, लेकिन शूटिंग तो हो जाएगी ना. And on top of that, Tara Sutaria used to not take showers. So like Yeah, I didn't have a bath for 2 weeks because I really had to look at one point, which is not even in the trailer. So तारा को तो 2 लोग आते थे ऐसे इसको पकड़ के, एक इधर पकड़े हुए है, एक इधर तारा को ऐसे आ रही है.
हम लोग बोले कि क्यों इसकी दुर्दशा नहीं कर सही रहे में हैं। कभी बार बुरा लगता था और यार, बुरा कभी बार लगता था। जेन्युइनली बुरा और लगता था, फिर लगता है ये यार क्या करवा जैसे रहे हैं। एक्शन बोला तो सबको छोड़ के फिर ये अपनी टोटल वही एनर्जी, और जैसे कट हुआ अरे बाप रे। तो quite literally जो खून पसीने की कमाई जो वो बोलते हैं वो इस Totally, फिल्म में हुई है, totally. from what we've heard. So this is of course piqued our curiosity quotient. Thank you for this very fun interview and all the Thank you. revelations.